Welcome to the program. You're listening to SIRAJ ZAIDI until 5 o'clock, and I hope anywhere in the world you shall be tuning me in right now to listen the weekly show of Apna Radio broadcasting at 93.9 Dublin South FM. Yes, this is your own Apna Radio broadcasting here from the Dundrum Town Centre until 5 o'clock here at the Irish Times, and indeed 9:30 in India time, and of course whatever the time zone you are in, you're tuning me in, you're very welcome to the program. Today's program, as usual, filled with the material, filled with the news, filled with the wonderful contribution from London. So there we go. I would kick off the program straight away with the news item. So sit back, relax, and listen to the news of the week from India. Good afternoon, I'm Charmaine Colvin and here is your weekly news update on Apna Radio 93.9 Dublin South FM. On India this week, one of the two men suspected of carrying out a mass shooting at Bondi Beach was originally from southern India but had limited contact with his family there, police sources have said. Sajid Akram, 50, who died at the scene in Sydney on Sunday, was originally from the city of Hyderabad, a police official from the Indian state of Telangana said. He had travelled to India just 6 times since moving to Australia in 1998, and his family expressed no knowledge of his radical mindset or activities, the official added. Sajid and his 24-year-old son Naveed are suspected of killing 15 people and injuring dozens more at an event celebrating the Jewish festival of Hanukkah on Sunday. The factors that led to the radicalisation of Sajid Akram and his son Naveed appear to have no connection with India or any local influence in Telangana. The official also said Sajid Akram had no criminal record in India. He had completed a degree and had moved to Australia in search of employment before marrying a woman of European origin. Police are currently investigating why the father and son travelled to the Philippines in the weeks leading up to the attack. They arrived on the 1st of November and left on the 28th, the country's Immigration Bureau confirmed. It is believed that Naveed Akram was previously investigated over ties to a Sydney-based IS terrorism cell, ABC reported. IS is an extremist Islamist militant group that has claimed responsibility for a number of terrorist attacks across Europe and America, including the 2015 Paris attacks. The Australian Prime Minister Anthony Albanese said Naveed Akram first came to the attention of the authorities in 2019 on the basis of being associated with others. However, at the time, an assessment was made that there was no indication of any ongoing threat or threat of him engaging in violence. India's exports leapt in November in defiance of US President Donald Trump's steep tariffs, providing fresh leverage in ongoing trade talks with Washington and easing pressure on New Delhi to strike a quick deal. Shipments to the United States rose more than 22% in November from a year earlier, outpacing India's overall export growth of more than 19%, which lifted total good exports to $38.13 billion, government trade data released on Monday showed. Goods exports were the highest for any November in a decade. Robust shipments have tempered fears of a prolonged tariff-led slump after trade talks between the two nations fell apart and Trump doubled duties on Indian goods to 50% in late August, the highest in the world. The hike included a 25% levy that was in retaliation for India's purchases of Russian oil. The move had initially hit exports and pushed the rupee to a record low as investors awaited progress in trade negotiations. Exports to the US had fallen nearly 9% year-on-year in October after touching a record low in September. Analysts said November's export recovery, coupled with India's strong domestic economy, reduces the urgency for New Delhi to make concessions in talks with Washington. After the recovery in US exports, despite no tariff relief, India now has the leverage to press for a tariff cut to 25% from 50%, especially after sharply reducing Russian crude imports, said Ajay Shrivastava, founder of the Global Trade Research Initiative. Economists cited diversification and strong domestic demand as key drivers of resilience, which helped India's economy beat forecasts to grow 8.2% in the July-September fiscal second quarter. GDP is forecast to accelerate to at least 7% in the 2025-26 year.
The US-bound exports have been led by tariff-free sectors, such as electronics, while tariff-hit sectors have performed better than expected, likely due to exporters tapping new markets. Over the years, rising domestic production of smartphones by global giants such as Apple has been central to India's manufacturing push. Between March and May, for instance, nearly all the iPhones exported by Foxconn from India went to the United States, reflecting a realigning of its Indian exports to almost exclusively serve the US market this year. India's anti-terrorism agency, the National Investigation Agency, NIA, has charged 2 Pakistan-based militant groups and 6 people in the attack on tourists in Indian-administered Kashmir this April that left 26 people dead. The massacre in the tourist town of Pahalgam brought nuclear-armed India and Pakistan to the brink of war. India blamed Pakistan for the attacks, an accusation Islamabad denied. Pakistan-based Lashkar-e-Taiba, designated as a terror organisation by the United Nations, and the Resistance Front have been charged with planning, facilitating and executing the attack. Pakistan's government has not yet commented on the charges. The TRF had initially said it was behind the attack, but later denied its involvement. The NIA said its nearly 8-month probe traced the conspiracy to Pakistan and that further investigation is continuing. Kashmir has been a flashpoint between India and Pakistan for long. The two neighbours claim the region in full, but control only parts of it. The countries have fought 2 wars over the restive region. The Pahalgam attack was one of the deadliest militant attacks in Indian-administered Kashmir since 2019. On the 22nd of April, a popular tourist meadow turned into a killing field when militants singled out and shot dead 25 male Hindu tourists in Bazaran, about 7 kilometres from the town. A local Muslim pony handler who tried to help was also killed. Within days of the attack, India revoked the 1960 Indus Water Treaty, while Pakistan responded by withdrawing from the 1972 similar agreement on bilateral dispute resolution. In the weeks that followed, the two countries exchanged missile and drone strikes in a 4-day conflict that ended in a fragile truce. Schools in Delhi and surrounding areas have moved classes online, and construction has been banned as the Indian capital grapples with hazardous air quality. On Monday morning, a toxic haze engulfed the city, affecting visibility and delaying flights and trains. The city's air quality index was more than 30 times the limit recommended by the World Health Organization. Exposure to this level of pollution can cause serious health problems, especially in children and elderly people. The problem is attributed to a mix of factors such as industrial emissions, vehicle exhaust, dropping temperatures, low wind speeds, and the seasonal burning of crop stubble in neighbouring states. India's Commission for Air Quality Management has invoked the highest level of its Graded Response Action Plan to tackle pollution. As a result, older diesel trucks have been barred from entering Delhi, construction activity has been halted, and schools have been told to switch to hybrid classes with younger children required to study online. More than 200,000 cases of acute respiratory illnesses were recorded in 6 state-run hospitals in Delhi between 22 and 24. As the capital struggled with rising pollution levels, the federal government told Parliament early this month. And finally, football superstar Lionel Messi has wrapped up his 3-day Indian tour in pollution-choked Delhi after a chaotic opening in Kolkata. On Monday, thousands of fans gathered in a Delhi stadium to get a glimpse of the Argentina and Inter Miami forward. However, his flight from Mumbai had been delayed due to fog, and his itinerary had to be trimmed. On Saturday, angry fans vandalised Kolkata Stadium because they didn't get to see him during his appearance there. Before heading to Kolkata's Salt Lake Stadium, he virtually unveiled a 70-foot statue of himself, assembled over 27 days by a 45-strong crew in the eastern city. And that's all from me. You have been listening to Apna Radio 93.9 Dublin South FM. Welcome back to the program, and thank you very much indeed, Charmaine, that you have actually excellently put together Lionel Messi's stories as well, that I didn't realize that Lionel Messi is so popular as a footballer in India, where football is not really considered to be the game. Cricket is the one which overshadows everything. But anyway,
things are changing, the world is changing, and with the world of changing world, the policies are changing. The rebranding of the old policies. That's another game that is going on in India. This particular government is just plays. It really surprises me, game after game after game, that whatever has been done, said and done before, has no credibility whatsoever, and things that has been working as a policy have no credibility either. And according to, obviously, for the present government. And so, therefore, what is happening is that they are literally rebranding everything they can. And one example is this MNREGA. And what it is called GRAM-G. And that's another interesting policy change or rebranding policy that has been, been practiced recently. So Bashar has got a very good information on that, and so therefore I let him to explain what GRAM-G is all about. Obviously, it's a branding and stamping, rubber stamping their own brand of the understanding, rubbishing anything which Gandhi Nehru policy has actually done for the country for over the years. Anyway, sit back, relax, and listen to this particular piece. Rural Employment Guarantee Act 2005. Now, this act of 2005 was a right-based entitlement to discretionary welfare schemes, and this act is now being repealed and replaced with Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill 2025. And very interestingly, Manrega is now being called VB Viksit Bharat GRAM-G. Now, this is a decisive ideological rupture in India's welfare architecture, and we will discuss about this. But then the name of the god has come into the scheme also, GRAM-G, instead of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So the removal of Mahatma Gandhi's name is not just symbolic, but a deeper rupture lies in dismantling one of the world's largest rights-based social protection laws. And now, with this GRAM-G Act, it is being replaced with a conditional and a central central government's managed scheme. So a bit of a background. Manrega, the old scheme, was not merely a poverty alleviation program. It was a statutory guarantee enforceable through law, where an adult member of a rural household could demand work, and the state was legally obliged to provide employment within 15 days or pay an unemployment allowance. So that was the strength of Manrega, the old scheme. And this demand-driven character placed Manrega in a rare global category alongside post-war European social and democratic institutions. So this was one of the finest schemes that the previous governments have envisaged, implemented, and the effects of this scheme had been enormous. So like between 2006 and 2024, the old scheme had generated 32,000 million person days of employment, like 3,200 crore in the Indian numbers, with annual participation ranging from about 55 million to 80 million households, 5.5 crore to 8 crore households. So that was the strength of that scheme. And during COVID, during the pandemic, it actually helped many households overcome the shock of the economics associated with it. But then, even though the new scheme, GRAM-G, retains the language of guarantee, but it empties out of legal force, and therefore it is weak in nature. The new scheme, the allocations are prefixed and they are capped by the central government. The employment ceases to be a right, like in the previous case, and now has become an administrative favor. So when the funds would run out, the rights of the employment, the rights of a person looking for employment, they also run out. And this is a return to pre-2005 welfare logic, where the work is charity, not citizenship. Now, after 20 years of Manrega, this has been reversed and the rights have been abolished. Economically also, according to the Reserve Bank of India, the Central Bank of India, in two of its report estimated
that rural public spending through the old scheme Manrega had a multiplier effect between 1.6 to 2.5. And according to Azim Premji University, the study found that every 100 rupees spent under the old scheme, it generated 160 rupees to 200 rupees of local economic activity. So historically, advanced economies also moved in this direction. So like in Great Depression, the United States institutionalized public employment through New Deal agencies like Work Progress Administration, WPA, which employed at the time 8.5 million Americans between 1935 and 1943 as a matter of federal obligation. Europe, after the Second Great War, 1945, embedded employment and social guarantee as a justiciable right within its welfare states. Now India is rolling back. Therefore, I would say it's not a reform, it's a regression. And if you look at what is going to be the structure in the new act, in the new welfare scheme as they call it, there are serious fault lines. The gravest structural flaw that I can see is that the fiscal design of the old scheme, if you compare, it was 100% unskilled wage cost came from the central government. 75% of the material cost came from the center, and 75% of the skilled and semi-skilled wages came from the center. Now, this was deliberate because in principle, rural distress is a national macroeconomic concern and it's not just a state level problem. While in the new scheme, G Ram G, it proposes 60-40 center state funding pattern for which the state will pay 60% and 90-10 for northeastern and Himalayan states. So if you look at this 60-40 ratio, the states are going to end up collectively shoulder more funds, more burden to the tune of rupees 50,000 crore or let's say $5 billion to $70 billion. Now this is way too much for the states to bear. And therefore, structurally, this fiscal retreat from the central government with the new scheme comes at the time when the state's own revenue autonomy has shrunk. And why I am saying that the state's revenue autonomy has shrunk, because with the introduction of GST in 2017, states' share in the gross tax revenues have declined. And with this compensation mechanism, the overall revenue to the states have weakened. So a little bit complicated, but then this is the situation that fiscally there is a structural flaw. Now the center, when it withdraws the wage responsibility to 60-40, it is now offloading. It is fiscal responsibility to the states without accountability. And if you compare it with the international schemes, in US, like I said, the WPA and the New Deal employment program, 90% was federal funded. Even Japan's post-war rural public works, which was used to stabilize the income during the transition in the 50s and 70s, it was centrally financed through national budgets. European Union today as we speak, employment stabilization during crises like the Greek crisis or like the German Kurzarbeit during the COVID, they were overwhelmingly funded by federal mechanisms. So G Ram G, the new policy, thus, if you look at, violates the basic principle of cooperative federalism, because those who are designing the scheme, they must control the scheme, and in this case, it is not being done so. In turn, the center is centralizing its power, it is socializing the cost to the states, but then monopolizing the political credit of bringing in a brand new, rebranded, renamed scheme, a welfare scheme for people of India. So what is the difference? The difference is that Manrega was explicitly demand driven. Gram Panchayats aggregated a household demand, states complied with estimates, and the center funded the requirement. Now this was a bottom-up flow, though messy, imperfect, and administratively challenging, but it was democratic in nature. The Indian principles are all democratic, so that was democratic in nature. The new scheme, G Ram G, actually inverts this logic. And now the center will determine state-wise the allocations which are based on the parameters prescribed, and any expenditure beyond the ceiling of 60-40 will become the sole responsibility of the state. So there is a structural disincentive to address to the distress. And we have seen in various studies and on-ground realities that the old scheme Manrega, the demand spiked when there were droughts, floods, agrarian price crashes, or migration shocks.
Now with this prefixed allocations, these fluctuations of drought floods and other price crashes, they are difficult to anticipate, and therefore it is going to bring distress to the rural households. Although there are lessons from the Great Depression that the US government employment programs, they were expanding automatically with the unemployment levels. In Scandinavia, post-war labor market policy involved automatic stabilizers, and they were expanding during downturns with fresh legislative approvals. So now when 60-40 is fixed with the new scheme in India, it is actually abandoning the logic in favor of fiscal and bureaucratic rationing. And therefore, it is not an employment guarantee scheme. It is not a household welfare scheme in rural areas, but it is a budget scheme. And this is a major difference. There is one positive in the new scheme, that there is a mandatory 60-day no work period during the peak agricultural seasons. Because of Manrega, there were complaints that there are fewer workers during the season, and the large farmers were facing problem with the harvesting or even the sowing season. So the new scheme has taken care of bringing in a furlough period of 60 days so that the private people can employ the labor. Now, how much that will be fruitful in the season, we will get to know when the rubber hits the ground. If you look at the old scheme under Section 10, the Central Employment Guarantee Council mandated that under that scheme, the old scheme, 1/3 women representation and 1/3 representation of SCs, STs and OBCs was required. Now the new scheme, G actually drops these requirements at the central level, and therefore this omission of the backward classes in the scheme has now come into the inclusion or discretion or at the state level. Now there is going to be some confusion in the implementation. We will see how it pans out in this era of rebranding, renaming, relabeling by the new government. This particular act is not a reform. This is a reform with regression. Employment guarantee laws are not merely welfare schemes, they are political between states and poor citizens. Even though Manrega, the old scheme, was imperfect, it was leaky and uneven, it did work in India when it needed most. Pandemic, one example in this case. G is dependent heavily on the efficiency of the technology, of the Aadhaar system, of the transfer, of the monitoring through satellite, and is heavily dependent on geotagging and the dashboards. So from democracy to technology, there is a philosophical shift between the two policies and the two acts of parliament. The power with the new act is getting centralized while the cost is shifting to the states. The budgetary caps have become restrictive, and it is weakening the local democracy, and it is disciplining the labor. So if you look at the history, whether it is Europe, Japan or Americas, the nation's progress depends on how the rights have expanded in the times of transition, not retracting them. After all, this is Keynesian law of economic multipliers, which we have to take advantage, and Manrega did take advantage to boost the rural economy. Therefore, the new Act of Parliament, G is not a reform. It's the repeal of the old Manrega, which was working very well with millions of households in last 20 years. Let's see how the new Act of Parliament works out. There are few concerns, but then there is a hope that this relabeling and rebranding will bring about a positive change in the Indian rural households. With that spirit of hopefulness, I leave you until next year. Stay safe, stay informed, dutifully ask question. Merry Christmas and wish you a very happy New Year. See you then on the other side. Bye for now. Dublin South FM. You wouldn't buy a car without knowing its history. So why would you buy a story without knowing who's telling it? Come here and I tell you. It's not always easy to verify what you see, read or hear. But now there's help. Visit www.bemediasmart.ie. Stop, think, check. Be Media Smart. Brought to you by Media Literacy Ireland, supported by RTE. 93.9 Dublin South FM. Welcome back to the programme. Indeed, it was a rebranding, and Manrega was the scheme that has been rebranded to G now. And if you really want to know a little bit more about it, you can always Google it.
But Sharad has actually done a great job by putting it to the, as I said, to the core of the problem that existed in this. Everything that has been done before has been rebranded and all that. Anyway, we're talking about another problem in the world today, and particularly the Indian film industry where I belong to. And the current situation is quite disturbing in a sense that it is a new form. It's always been the case that film industry in India has been operating on the basis of a successful formula. And success means box office success, not a critical success. And if the film makes a pocket of money and bags of money, that has been considered the most successful. Despicable content is okay-ish, and awful content, if the contents are okay, even then it's okay as long as it's made a film, crores and crores of movie. In the beginning, the films of Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan used to make a massive amount of crores of movies. So therefore, they were considered to be the golden boys of the industry. But now, a latest trend is that a remaking of the South Indian films. There's a lot of Tamil, Telugu films have been remade, and they were quite successful. But now the latest of the latest is the obsession with Pakistan. And indeed, ever since that Pahalgam attack happened and the tit-for-tat war happened, a 4-day war happened, the obsession with Pakistan is getting, worse when it comes to the actual making movies and picking up stories and exaggerating. Outrightly propaganda filmmaking is in operation now. What is propaganda filmmaking? Remember during the time of Second World War, Hitler time, there was been, many films been made by Jewish filmmakers, such as, the Hollywood filmmaker, was his name, Schindler's List, who made all of these guys have been at it one after another. They were making a massive emotional, churning out emotion. Steven Spielberg, although very credible director, Steven Spielberg has been accused for making a propaganda film. In fact, Hollywood studios have been funding that. And that formula has actually been translated. Remember Border film, which was also based on a war in Kargil, I think it was, or some sort of Indo-Pak war. But then now a Border 2 has been planned, and many other films which had been made on Indo-Pak war has been making crores and crores of rupees. But latest film, not only Indo-Pak war, but it's actually derogatory, showing Pakistan in a kind of like in a bad image, and a gang war movie, Dhurendhar. Yes, I'm talking about Dhurendhar. Dhurendhar is a local colloquial word, but I come from Uttar Pradesh, UP, and we say that, it's such and such so person is Dhurendhar. Dhurendhar means dhakar, dabang, all of the same kind of categories, and it's a colloquial word. Not many people would know who do not belong to Uttar Pradesh. Dhurendhar is the word used for this particular movie, which has been made in order to, create hatred among people of sort of India towards neighboring Pakistan. But it is done in such a bad taste that is something which is need to be discussed. And when I was talking to a lady who is a credible journalist, is just back from United Nations, attending United Nations conference in the US. Her name is Arfa Khanam Sherwani, and she's very well known if you see her website and her YouTube channel. So she talks about it, how in bad taste this film has been made. And obviously she's talking to the Indian audience in Hindustani and Indian language. But after her explanation, I will brief you in English what she said. Sit back, relax, and see and listen to what she has to say.
इस फिल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो न सिर्फ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके बिलीफ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, कि जिस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, कि राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब, आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया, 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं, कि इसलिए किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ एक राष्ट्र से नफरत करने में गुजर जाए। बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज्म है वो दिखाया गया है। नमस्कार, मनोरंजन की दुनिया में इन दिनों एक नई फिल्म ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि उपमहाद्वीप में सनसनी मचा दी है। म्यूजिक ज़बरदस्त है, इतना कि थिएटर हिल जाए। एक्टिंग भी इतनी शानदार है, खासकर अक्षय खन्ना ने तो कहा जाए तो पूरा का पूरा मुशायरा एक तरह से उन्होंने लूट लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक अच्छी लगती है, क्योंकि इसके बाद जो शुरू होता है वो है असली मसला कि आखिर परेशानी क्या है फिल्म में। धुरंधर नाम की ये फिल्म जिसने पाकिस्तान, उस पर पाकिस्तान की सरकार, उसकी फ़ौज और आईएसआई के जो भारत विरोधी जो कारनामे हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सपोज करती है और दर्शकों में एक तरह की राष्ट्रवाद की भावना जगाती है। लेकिन जब आप थिएटर के अंदर बैठे 2.5 नहीं बल्कि पूरे 3.5 घंटे इस फिल्म को झेलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फिल्म नहीं, शुद्ध प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। अब आप देखेंगे कि आपने ये फिल्म, आप सोचेंगे कि आखिर देखी तो क्यों देखी। तो सुनिए, मैं कभी कभी मनोरंजन के लिए फिल्में ज़रूर देखती हूँ, लेकिन फिल्मों के रिव्यू लिखना ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। जब तक कि ये फिल्म किसी हमारे सामाजिक किसी परिप्रेक्ष्य में या राजनीति पे असर ना डाले, मैं उन्हीं फिल्मों को अहमियत देती हूँ जो समाज और राजनीति को इम्पैक्ट करती हैं। और ये एक उसी तरह की फिल्म है जिसकी कामयाबी पहले से ही टूटते और बिखरता हुआ जो भारतीय समाज है उसमें एक आखिरी धक्का दे रही है। इस फिल्म में एक नहीं बल्कि मेरी नज़र में इस फिल्म में दर्जनों समस्याएं हैं और इनको अनदेखा करना आज की तारीख में बेहद ख़तरनाक होगा। हम किसी के पास ये लग्जरी नहीं है, क्योंकि हमारा समाज जिस मुहाने पे खड़ा हुआ है वो बेहद ख़तरनाक मुहाना है। इस फिल्म की कई परतें आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके लिए खोलने वाली हूँ। 3.5 घंटे की ये तकलीफ़ और अजियत मैंने सही है ताकि आपको ये ना सहना पड़े और आपको अपनी ऊर्जा और अपना वक्त ना लगाना पड़े। इसके लिए मैंने आपके लिए कुर्बानी दी। आइए शुरुआत करते हैं कि इस फिल्म का असली जहर क्या है। क्यों मैं ये कह रही हूँ कि बाजार में जहर का एक नया इंजेक्शन आया है और भारतीय समाज में ये छिपा नहीं बल्कि बहुत खुला हुआ ये प्रोपेगेंडा है। कई स्तरों पर इसका संदेश इतना खतरनाक है कि हजारों घंटे का जो ब्रॉडकास्ट है टेलीविजन चैनल का, न्यूज़ का, वो अपने आप में इतना खतरा नहीं लाता जितना कि ये एक फिल्म इस खतरे को अंजाम दे रही है। इस फिल्म को देखने के बाद एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर मेरा ये फर्ज है कि मैं आपसे इसको रूबरू कराऊं कि इस फिल्म को देखने जाने का फैसला आप इस रिव्यू के आधार पर ही कीजिए। और सबसे बड़ी बात मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप इस फिल्म को हरगिज ना देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें। और इसीलिए मैंने ये जहर का कड़वा घूंट आपके लिए पिया ताकि आपको ये ना करना पड़े। समस्याएं क्या हैं इस फिल्म? समस्या नंबर 1, इस फिल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फिल्म देखकर लौटते हैं तो न सिर्फ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके बिलीफ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। आपके अंदर, आपके खून में उबाल लाने के लिए इस कदर इंग्रेडिएंट्स इस फिल्म में डाले गए हैं कि बेहद ख़तरनाक एक फॉर्मूला है।
खासकर मैंने कहा कि ऐसे वक्त में जब भारत में पहले से ही नफरत और हिंसा का वो आलम है कि सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है, लिंचिंग हम देख रहे हैं अलग अलग लोगों की, खासकर मुस्लिम समुदाय, दलित और ईसाई, इन तमाम लोगों पर जिस तरह का हमला है हम साफ तौर पर देख रहे हैं। जो भी कमजोर है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही जो हमारी राजनीति है, 56 इंच के सीने की राजनीति, जिसे मर्दवादी राजनीति कहते हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन हो या फिर ये हमारे नरेंद्र मोदी हो, ये जो मजबूत जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उनकी जो बेहद मर्दवादी जो राजनीति है, मिसोजिनिस्टिक, एंटी वुमेन पॉलिटिक्स, उसी के तौर पर उसी का एक फिल्मी वर्जन देखने को मिलता है। 3.5 घंटे की हिंसा के बाद मैं और मेरी करीबी दोस्त, जो मैंने आपको बताया मेरी अजीज दोस्त, हम दोनों फिल्म देखने गए थे और उस हमारा प्लान ये था कि फिल्म देखने के बाद हम डिनर के लिए भी जाएंगे। आप यकीन जानिए, फिल्म हॉल से निकलने के बाद बहुत देर तक हम दोनों एक कुर्सी पर बैठे रहे, बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम शायद खुद इतने ज्यादा निजी तौर पर प्रभावित हुए उस बेहद बेदर्द और मैं कहूंगी गैर इंसानी हिंसात्मक माहौल से कि कई बार मेरी दोस्त ने मेरी आंखें ढकी कि तुम मत देखो, ये इतना बुरा सीन है, और कई बार मैंने उन्हें बातों में उलझाया ताकि वो सीन ना देखें। आप सोचिए कि इस फिल्म में दिखाया तो ये गया है कि पाकिस्तान के लियारी में एक लियारी वहाँ का इलाका है, वहाँ गैंग वॉर के सीन्स हैं, लेकिन इस फिल्म में उसी गैंग वॉर को दिखाते हुए जो हिंसा का इतना बदतरीन और बदसूरत चेहरा कि मुझे बेहद शिकायत है हमारा सेंसर बोर्ड से कि किस तरह से अपनी राजनीति, अपनी ओछे फायदे के लिए आप सरकार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। आपको इस बात की शर्म लिहाज नहीं है कि आप सोसाइटी में किस तरह के जो जहर भरे इंजेक्शन है हमारे समाज में आप लगाने दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर आप सरेआम गले काटे जा रहे हैं, यानी शूट वूट करना तो भूल जाइए, आप बंदूक से मारना और किस तरह से टॉर्चर करने के जो सीन्स हैं, खासकर ये तबाहनाक सीन है। इस तरह के सीन्स हैं कि रातों को आपको नींद नहीं आएगी, और बताया ये जा रहा है कि जो खराब लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको सजा देने के लिए इस तरह के टॉर्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे तरीके से कहीं से भी ये बात कोई लीगल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का निज़ाम हो या हिंदुस्तान का निज़ाम हो। ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हों, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। तो दिखाया तो ये जा रहा है कि ये सजा आतंकवादियों को दी जा रही है, हालांकि ये जो गैंग वॉर है लियारी की, इसमें आपस का ही मसला है, आपस में ही गैंग्स एक दूसरे के साथ हिंसा और एक दूसरे के साथ ये टॉर्चर का खेल खेलते हैं। और इसके बाद जिस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है हिंसा को, आप ये सोचिए कि यानी पूरे तरीके से दोनों जो गुट हैं वो एक दूसरे में, यानी जब वो एक दूसरे की हत्या कर रहे होते हैं तब बाकायदा धूम से संगीत बज रहा होता है। तो संगीत के साथ वायलेंस का ये खतरनाक मिक्सचर है। दूसरी बड़ी बात कि किस तरह से पाकिस्तान विरोध के नाम पर मुस्लिम विरोध, इस फिल्म की सबसे बड़ी समस्या हिंसा के बाद, हिंसा सबसे बड़ी समस्या है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध। अब मुझसे लोग कई ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बुली कर रहे हैं, मुझे टीज कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा पूरे पूरे वीडियो प्रोग्राम्स मेरे ऊपर बनाए जा रहे हैं कि मुझे धुरंधर क्यों पसंद नहीं है, चूंकि पाकिस्तान की आलोचना हो रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जिस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, जो मुस्लिम संकेत है यानी कि पहनावा, उढ़ावा, ये सब मिलाकर जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान कितने घटिया और वायलेंट होते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तान का जिक्र है तो जाहिर है हमजा नाम होगा, रहमान नाम होगा, मलिक नाम होगा, कोई नाम श्याम तो नहीं हो सकता, कोई नाम सुरेश तो नहीं हो सकता, कोई नाम कुछ विकास तो नहीं हो सकता। और जब भी यहाँ पर खासकर बहुसंख्यक समुदाय के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जब अपने मुस्लिम पड़ोसी को देखेंगे, किसी का नाम हमजा भी होगा, रहमान भी होगा, मलिक भी होगा, और भी नाम होंगे, उनको जब वो देखेंगे तो सीधे तौर पर वो इस बात से सीधे रिलेट कर पाएंगे कि पाकिस्तानी खराब होता है, पाकिस्तानी उनसे बहुत दूर रहता है। ज्यादातर भारतीय ना कभी पाकिस्तान गए हैं और हो सकता है कभी ना जाएं, लेकिन पड़ोस में रहने वाला जो मुसलमान है, रास्ते में मिल जाने वाला मुसलमान है, जो ट्रेन में या बस में सफर करने वाला जो मुसलमान है, उस मुसलमान से नफरत करना तो बेहद आसान है। जब हमारी राजनीति, पूरी की पूरी राजनीति ये चाहती है, हमारे टीवी चैनल ये चाहते हैं, हमारा पूरा का पूरा समाज का एक बड़ा धड़ा तैयार हो रहा है, हो चुका है, और ऐसे में ये एक फिल्म आके मैंने कहा कि हमारे समाज को आखिरी धक्का दे देती है।
इसके बाद मेरी समस्या इस बात से है कि राष्ट्रवाद या देश प्रेम, उसकी इतनी भद्दी और संकीर्ण परिभाषा गढ़ी गई है कि राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब, आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियां दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया, 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं, क्या इसलिए किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ एक राष्ट्र से नफरत करने में गुजर जाए? बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज्म है वो दिखाया गया है कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं अगर आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों की सहायता करें, आप भारत के विकास की बात करें, आप भारत में बराबरी की बात करें, आप पत्रकारों के और आम लोगों की बोलने की आज़ादी की बात करें, जातिवाद को खत्म करें, दहेज प्रथा खत्म हो, महिलाओं को अधिकार मिले। इस सब के लिए नहीं, हिंदू जो जगाने का काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो पाकिस्तान से नफरत करेगा। पाकिस्तान से नफरत कीजिए, आईएसआई से नफरत कीजिए, मिलिट्री से, सरकार से, जो लोग भारत विरोधी कारनामों को अंजाम दे रहे हैं उनसे नफरत की जानी चाहिए। लेकिन क्या इसी एक छोटी सी परिभाषा में अपने राष्ट्रवाद को हम पूरे तरीके से लपेट देंगे या निपटा देंगे कि यही हमारा राष्ट्रवाद है? अगली बात आती है कि किस तरह से राष्ट्रवाद के बाद जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है उसका बहुत ही खुले तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया है। मैं तो सोच रही थी कि ये तो बहुत बुरी खबर है न्यूज़ चैनल्स के लिए और न्यूज़ चैनल्स के 5 स्टार एंकर्स के लिए। दिन रात बेचारे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन पूरे तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो एक अच्छा माहौल तैयार नहीं कर पा रहे हैं इस मौजूदा सरकार के लिए कि अब बाकायदा जियो यानी अंबानी जी की जो कंपनी है उसको बनानी पड़ रही है इस तरह की फिल्में कि कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाया जाए और बीजेपी की सरकारों को बेहतर दिखाया जाए। तो इसी तरह से फिल्मों के नाम पर सीधे तौर पर खुले खुले डायलॉग हैं। हमारे पास खुफिया खबर है लेकिन हम सरकार बदल जाने का इंतजार करेंगे और तब जाके ये देंगे जब कोई बेहतर ऐसी सरकार होगी जो हमारे हक की होगी, हमारे हित की होगी। इस तरह के डायलॉग्स हैं। और ये भी कहा गया है इसमें कि जितना खतरा भारत को बाहर के लोगों से है उतना ही अंदर के दुश्मनों से है। इस तरह के शब्दों का भी सीधे सीधे इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा के तौर पर वही शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसता है, घर में घुस के मारता है, इस तरह की श्रील भाषा का इस्तेमाल। और आप ये देखिए कि आखिरी बात इसमें यह है कि किस तरह से इनटॉलरेंस, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर कल को ये पता चले कि फिल्म निर्माताओं ने बाकायदा लोगों को पैसे दिए हैं, इस बात के लिए फंड किया है कि वो उन लोगों को बुली करें, उन्हें परेशान करें, उनको हरास करें जो लोग इस फिल्म का नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। ऋतिक रोशन जैसा सुपरस्टार, उन्होंने ये लिखा कि फिल्म बहुत अच्छी लिखी है, उन्होंने कसीदे गढ़े इस फिल्म के और कहा बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं होता एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर, और हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक लास्ट में उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया, तो सीधे तौर पर जो उनकी गर्लफ्रेंड है सबा आज़ाद, कहा गया कि उनके पास पासवर्ड है। तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ और लिखा और ट्विटर पे उन्होंने बाकी लोगों को खुश करने के लिए इस सेंटेंस को हटा दिया कि वो असहमत है राजनीति से। तो इस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया कि देखिए कंगना रनावत के पास तो इंस्टाग्राम नहीं ट्विटर का पासवर्ड है और इंस्टाग्राम का पासवर्ड सबा आज़ाद के पास है। सबा आज़ाद के पुराने वीडियोस जिसमें वो CA-NRC प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से भद्दी गंदी भाषा का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जिन लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया है, जिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, ये फिल्म पसंद नहीं आई। और वो मेरे जैसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नहीं है, वो बाकायदा देश के जाने माने और मशहूर फिल्म क्रिटिक हैं। वो लोग हैं जिनको फिल्म निर्माता निर्देशक सुनते हैं और उनके आधार पर लोग ये तय करते हैं कि फिल्म देखी जाए या ना देखी जाए। तो पूरा लब्बे लुबाब इस पूरे वीडियो का ये है कि बेहद खतरनाक ये एक प्योर और प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। सरकार और सरकार की आइडियोलॉजी और सरकारी जो पार्टी है फिलहाल सरकार में, उस सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने की पूरे तौर पर कोशिश है। दूसरी बड़ी बात, हिंसा का बहुत गलत इस्तेमाल है। हमारे समाज को और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा बदतर और कट्टर बनाने की ये बहुत ही घटिया कोशिश है। इसके अलावा सीधे तौर पर पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम विरोध फैलाने की और ज्यादा एक बहुत ही बदतरीन ये कोशिश के तौर पर मैं इसको देखती हूँ। Now, this is Arfa Khanam Shirwani, and I must take a break here to comment on her reaction to it. So sit back, relax, and I'll be back. Don't go anywhere. Just take a small break, and I'll be back. Broadcasting from the Dundrum Town Centre, this is Dublin South FM. Are you part of a local community group or representative organisation active in the Dunleary Rathdown area?
Why not join a network of over 400 such groups in the Dún Laoghaire Rathdown Public Participation Network? You can join the group, influence local policy, get regular updates about funding and other opportunities, connect with other groups like yours, publicise your group, and even get free training and support. Make sure your voice is heard through DLR Public Participation Network as a registered group in the county. Dún Laoghaire Rathdown Public Participation Network. For full information, find us online at dlrppn.ie. That's dlrppn.ie. Broadcasting to South Dublin on 93.9. This is Dublin South FM. Welcome back to the programme and broadcasting to the world, in fact, at 93.9 Dublin South FM through my YouTube channel, Apna Radio. So this programme will be uploaded on YouTube channel. Just going to the world, because we're not only we're broadcasting to the entire world now. And thank you for listening, and thanks for my team that is working very hard to actually, particularly to Sharad Avasti, who has been very kind to actually run this channel and indeed make it so popular. Because the worldwide people are listening me and people are reacting to my programs. So this particular program, which Arfa Khanam Sherwani, who's a very well-known voice and journalist, and talking about this particular film, Dhurandhar, which is, as I said, it's a colloquial local name. And perhaps the director who comes from, I don't know who the director is, but I would urge you to not to see this film. And I would talk to my own censor board here to how they have passed this, because this kind of hatred is spreading in Europe, and particularly to all countries in Canada, Scandinavia, and America, where the Indian diaspora community and Pakistani diaspora community live very happily together. They have friends together, they work together, they play together, and things like that. They must do not propagate this film, because it's outrightly propaganda film, and a propaganda film must be criticized, as quite rightly Arfa Khanam Sherwani has criticized it so explicitly and so well in her own way. So now I have also lined up today a very, the old singer, in fact, who was also a songwriter. Remember Yogesh and beautiful films that he has written, beautiful songs that he has sung. So sit back, relax, and enjoy this particular track that I'm going to play now. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें।
कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गैरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन। सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती
बजती है बूंदें अरमां हमारे। That's it, because the time is really ticking over, and I wanted to get the Yogesh, who is the greatest poet of our time, has written wonderful songs. All of these songs that you have just heard are penned by Yogesh. So one more song I would like to to get in there before I say goodbye. Well, I'm saying goodbye now. And in fact, this is going to be our last show for the year. And we are closing down here for the Christmas. But there will be a Christmas program next week. And indeed, after that, we'll see you at the other side of the new year. Indeed, a year has passed. And in fact, in the, the New Year program, in the Christmas program, we'll be talking about the recapping of the year, so to speak, how the year 2025 flew by, what happened, what you achieved, what you have not achieved, what you have, successfully, and all the rest of it. So that's all. And thank you very much indeed for listening consistently every week. My program, Apna Radio, broadcasting at 93.9 Dublin South FM, and indeed on YouTube. If you have missed any of the program previous years and this year, that you can always go back on my YouTube channel, Apna Radio, and you will find all the songs and the program tagged there. So that's it, folks. Enjoy the rest of the holiday season, and Merry Christmas and Happy New Year, and I'll be back in the new year. Bye for now. अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन तेरा है ये तो हर